Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Keep the chart clean, guys. We'll start in 2 minutes. Good evening, SR. Good evening, Varun. Good evening, Samath. How did the book launch go? Amazing, man. Amazing. Good evening, Arundhati, ma'am. और एक आ जाने दो. We'll start in 2 minutes. Okay. Good evening, Nilesh. How are you? Hey, you. Eid Mubarak. आपको भी. Eid Mubarak. Who is missing? I think all of them are there. Yeah, let's start. जल्दी जल्दी करते हैं गाइस को. ये जो लास्ट 3 दिन में जो भी डाउट्स है पूछना शुरू कर दीजिए. स्क्रीनिंग तो होती रहेगी, राइट? सो डाउट जो है पूछना शुरू करो. टिल वेयर शुड आई होल्ड गोल्ड एंड बीटीसी? गोल्ड का नंबर इधर दिख रहा है, देखो ये नंबर तक 3144. बीटीसी का नंबर आके 8500 है. ठीक है. संडे का वीडियो मस्त था. थैंक यू सो मच. गुड इवनिंग स्मिता मैम.
रंजित, समर, नीलेश, आप लोगों को भी कोई भी डाउट है पूछ लेना एक बार। लास्ट 3 डेज में बैक टेस्ट करते हुए, फॉरवर्ड टेस्टिंग करते हुए जो भी डाउट्स आए प्लीज पूछ लीजिए। सर, yesterday's BTC explanation. Yesterday was Sunday, no? उससे अच्छा मैं स्क्रीनिंग ही कर लूं। आप लोग डाउट्स ही नहीं पूछते। Starting from daily time frame. What is market trying to indicate us at the current scenario? Market bearish है, right? POI range of action को मैं मार्क करता हूँ। POI range में जितना मूवमेंट अलोकेट होता है ना, उतना ही मूवमेंट ऑफ अलोकेशन पोस्ट इंड्यूसमेंट रेंज में मार्क करूंगा। जैसे ही मैं पोस्ट इंड्यूसमेंट रेंज यहाँ पे मार्कआउट करता हूँ, व्हाट डू आई नोटिस? द मार्केट टेंड टू टेक द रिजेक्शन एग्जैक्टली फ्रॉम द सेम स्पॉट ऑफ एक्शन, राइट? बायर्स अलोकेट हुए। जैसे ही यहाँ पे बायर्स अलोकेट हुए, वेयर इज माय फर्स्ट इंटरनल लिक्विडिटी पॉइंट? My first internal liquidity point has been taken under the consideration of this, which is at the body to body range. जैसे ही मैंने बॉडी टू बॉडी रेंज लिया, मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? मैं डिमांड अलोकेट करूंगा। जैसे ही डिमांड अलोकेट करूंगा, S2 B1 के बाद जितना भी मूवमेंट ऑफ अलोकेशन है, उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कंटिन्यूटी में अलोकेशन देखूंगा। जैसे ही कंटिन्यूटी में अलोकेशन देखा, व्हाट मार्केट ने क्या किया यहाँ पे? बॉडी क्लोजर कहाँ पे दी? बॉडी क्लोजर हमें जो डिमांड का रेंज है, उसी डिमांड का रेंज के अंदर से कंटिन्यूटी में दिखने को मिली थी। करेक्ट? पोस्ट दैट मार्केट ने ये एक मैथमेटिकल नंबर के साथ बिल्ड आउट दिखाया था। उसी बिल्ड आउट के साथ जो हमारा सप्लाई बिल्ड थी, उसे मल्टीप्लाई करके हम अलोकेट करेंगे रिट्रेसमेंट पॉइंट के बाद। राइट? रिट्रेसमेंट कितना लिया था? जो प्रीवियस सप्लाई हमें क्रिएट होते हुए दिखी थी, वो सप्लाई मल्टीप्लाइड वर्जन में आपको इस पॉइंट ऑफ एक्शन में रिट्रेस होते हुए दिखेगी। राइट? जैसे ही हमें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दिखा, what are the steps that we'll be doing? We'll be allocating the same point of interest. Right? मार्केट ने रिजेक्शन कहाँ से लिया? जहां से हमने सप्लाई मार्कआउट किया था। राइट? पोस्ट मार्किंग द सप्लाईज, मार्केट ने रिजेक्शन लेना शुरू की। फर्स्ट रिजेक्शन पॉइंट कितना होगा हमेशा? द फर्स्ट रिजेक्शन पॉइंट विल बी एज पर द मूवमेंट अलोकेशन। मतलब in this scenario, this will act as my current, right? In this scenario, this will act as my current. So what did market tend to do? Market created a S2 B2 setup. With S2 B2 setup, market नीचे आने को start किए। With this plan of action, market break की continuity के साथ 150% range out में I will look for an allocation point. Right? जैसे ही 150 point of action में allocation देखा, what are my next steps that I'll be following over here? क्या follow करूंगा मैं यहाँ पे? Mathematical precisions. Where will I look for a mathematical precision? 4 hours. क्या क्या मेजर सिनेरियोस हमें नोटिस करना है इस करंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में? राइट? करंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में देयर आर ओनली 3 थिंग्स दैट यू विल बी नोटिसिंग एज ऑफ नाउ। मैं सप्लाई डालूंगा ही नहीं, क्योंकि आप लोग सब इसमें डालने में माहिर हो चुके हो। राइट? सो इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में फर्स्ट मूवमेंट ऑफ अलोकेशन कौन सा था? ए वाला डिमांड। राइट? इस डिमांड के साथ आई विल कंटिन्यू द मूवमेंट, डबल द सप्लाई, sorry, double the demand and allocation. With double the allocation, what did market tend to do? Break and continue. 150% rejection point of interest mark करूंगा। क्या मेरा 150 point of interest is working as per my previous and current? Let's check. Right? With this point of interest, इसका 50% markout range ये है, right? And इसका 50% markout range ये है, right? With both the action plans, क्या हमें यहाँ पे एक रिजेक्शन दिखने को मिली है? यस, डेफिनेटली रिजेक्शन दिखने को मिली है। ये हो गया हमारा सिनेरियो 1। व्हाट इज माय सिनेरियो 2?
सिनेरियो 2 में अगर नोटिस कर रहे हो, वी हैव ए सप्लाई ओवर हियर, करेक्ट? सो ये सप्लाई कितना बिल्ड आउट में दिखा था? जितना हमारा प्रीवियस। ये प्रीवियस सप्लाई कितने में बिल्ड आउट दिखी थी? जो हमारा लास्ट रिट्रेसमेंट पॉइंट था उतना ही। इन द करेंट सिनेरियो अगर मैं इसे डबल करूंगा, सो दैट विल बी माय करंट रिट्रेसमेंट। करंट रिट्रेसमेंट के बाद जो मूवमेंट अलोकेट हुआ है यहाँ पे, that will be taken under the consideration. With the consideration, I will multiply it, place it, post the level conduct. राइट, लेवल कंडक्ट होने के बाद क्या यहाँ पे ब्रेक दिया है मार्केट ने? यस, मार्केट ने ब्रेक दिया है। व्हाट विल आई बी डूइंग? मल्टीप्लाइंग इट and allocating it, right? So in this point of interest, do we have a 150% rejection in this zone? Yes, we do. ये हमारा 150% था। रिजेक्शन लेके कंटिन्यूटी में आई है, करेक्ट? सो इन दिस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट आर माय नेक्स्ट स्टेप्स दैट आई विल बी फॉलोइंग? कितना रिजेक्शन लिया मार्केट में? जितना हमारा प्रीवियस रिजेक्शन था उतना ही रिजेक्शन लेके कंटिन्यूटी में बिल्ड आउट दिखाई। रिजेक्शन 1, रिजेक्शन 2, राइट? विद दिस रिजेक्शन मार्केट टेंड टू फॉल। कितना फॉल दिखने को मिलेगा? जितना हमारा प्रीवियस एक्शन पॉइंट है, राइट? जैसे ही प्रीवियस एक्शन पॉइंट कंडक्ट में आया, व्हाट आर द मेजर थिंग्स दैट आई विल बी फॉलोइंग एट द करंट स्टेज? क्या वो मेरा जोन तक आया है या नहीं? अभी तक जोन तक नहीं आई है, राइट? अगर जोन तक नहीं आया है तो क्या मैं एग्जिट करूंगा? नहीं, एमटीएसएल फॉलो करते हुए डायरेक्शंस में बना रहूंगा। With this, what are my next steps that I'll be looking at? Coming down to 1 hour. 1 hour में क्या दिख रहा है हमें? Beautiful price action. Let's allocate each and every point of interest at the current stage. ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। रिट्रेस कितना हुआ है इस पॉइंट ऑफ एक्शन में? जो मेरा प्रीवियस सप्लाई यहाँ पे जनरेट होते हुए दिखी है, that will act as my current with the current movement में break through. So उस break through के हिसाब से this will be my doubled quantity allocation through the retracement, right? Continuity में break आया है? Yes, definitely. With the continuity break, retrace कितना हुआ है मार्केट में? जो हमारा previous allocation point है यहाँ पे, उतना ही रिट्रेस होके कंटिन्यूटी में ब्रेक थ्रू दिखा है, राइट? दिस इज माय ब्रेक थ्रू पॉइंट। ब्रेक थ्रू पॉइंट में व्हाट आर द फर्स्ट स्टेप्स दैट आई विल बी लुकिंग एट? द फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्शन विल बी टेकन अंडर द कंसिडरेशन ऑफ दिस। इसके साथ अलोकेशन, पोस्ट अलोकेशन पॉइंट, ब्रेक एंड कंटिन्यू, राइट? ब्रेक एंड कंटिन्यू के साथ सिनेरियो 1, what did market tend to show? Exact 150% rejection. Scenario 2, जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ कंडक्ट है टिल द रिट्रेसमेंट पॉइंट, यहाँ पे रिट्रेस कितना हुआ? जितना हमारा प्रीवियस रिट्रेसमेंट पॉइंट ऑफ अलोकेशन है उतने का ही रिट्रेसमेंट यहाँ पे जनरेट होते हुए दिखी थी, राइट? उसके साथ कंटिन्यूटी। विद द कंटिन्यूटी, व्हाट आर द स्टेप प्लान ऑफ एक्शंस दैट आई विल बी लुकिंग ओवर हियर? With each and every merger, I will look for an allocation, right? So allocation point 2, do we have a rejection? Yes, we do. This is how we look into the precisions of the market and being in the directions in the flow. Okay, तो इसके साथ हमको यहाँ पे क्या दिखने को मिला था? बाइंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर। मार्केट में मार्केट में इस पॉइंट ऑफ एक्शन में कितना रिट्रेस किया था? जितना हमारा प्रीवियस रेंज ऑफ कंडक्ट है 1, दैट विल एक्ट एज माय करंट। उस करंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जो मूवमेंट अलोकेट हुई है, सो दैट विल बी एक्टिंग एज द प्रीवियस अलोकेशन। मतलब ये जो रिट्रेसमेंट पॉइंट जनरेट हुआ है ना, कितना रिट्रेसमेंट जनरेट हुआ है? जो हमारा डिमांड जोन में जो सप्लाई है, दैट विल एक्ट एज माय करंट, राइट? विद द करंट प्लान ऑफ एक्शन कंटिन्यूटी दिखी थी। कंटिन्यूटी में आई विल जस्ट मल्टीप्लाई। डू वी हैव a re-rejection point at 100%? Yes, we do. Do we have a selling position at the current stop of action? Yes. With this current stop of action, what is the setup that is being built over here? In this scenario, we have an S2 B1 setup, third candle execution, and continuity, right? And this point of action, do we have an execution? No, we don't have an execution here.
right? Do we have a setup? No, we don't have a setup. Do we have a reallocation point? No, we don't have a reallocation point. Do we have a pressure of buying? No, we don't have a buying pressure. When there is no allocation, when there is no precisions in the market, how will you look for a long? There is no point of looking towards the long, right? हाँ, मानता हूँ कि वो point of interest जो 1 hour में आपको दिख रहा है ये candle, it is of 1000 points, right? But swing trading के लिए क्या ये preciseful है? नहीं है, right? Why it's not preciseful? अगर if I come into the point of interest at the current state of actions, अगर मैं markout में देखूँ, right? Keep this point of interest as the swing high, this point of interest as swing low, this point of interest as retracement point. Check what is the mathematical numbers that you guys are getting at the current stage. Mathematical numbers क्या है वो check, right? At the current scenario, let's do the math. Let's go old school, guys. Excel आज नहीं है क्योंकि I am outside, तो उसके वजह से I am using the calculator and थोड़ा lag दिखेगा, तो please bear with it, right? So at the current stage, this is my swing high, this is my swing low, this is my retracement point. Okay. So post allocation of this, what are the next steps that I'll be looking? The next steps I'll be looking is for the mathematical precisions, right? So how does that work at the current state? The swing high is 8753.7.58, 8753.7.58 minus 84778.28, right? What is the formulative number that I'm currently getting? The formulative number that I'm getting is 2759.3, right? With that, what is the next steps that I'll be looking? What is the directions of the market? The directions of the market is bearish. What is the retracement point? 85613.29 minus the formulative number 2759.3 into 1.618, which is our golden ratio. What is the number that I'm having? The number that I'm currently having is 81148.74. Let's mark and check what does the market trying to do at the current stage. 81148.74. Where is my action? Action plan. 1, 2, 3. When three allocations is looked at the same particular moment, right? Definitely market will come down because without a liquidity, market will never take a price action and move. Okay, so is point of action may this will be taken under the considerations at the point angles towards the short because selling pressure jada hai, buying pressure both come. How will you look into that? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. हर एक कैंडल में सेलिंग प्रेशर दिख रही है बट बाइंग प्रेशर definitely we do have it but not as per the requirements. Let's look for a wing. कौन सा ज्यादा है at the current state of actions, right? One, एक marked है. Second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. Okay, let's look for the wings of long, right? One, two, three, four, five, six, seven, eight. Let's look for an allocation. One, two, three, four, five, six, seven,
8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Right? So at the current state of actions, market क्या indications दे रहा है? Market indications दे रही है. It's a selling pressure. Right? Buying pressure तभी build होगा जब को हमको 1 hour में ये setup दिखने को मिलेगी. रिवर्सल तभी जनरेट होगा मार्केट में जब आपको ये एक्शन प्लान दिखते हुए नजर आएगा, which is threshold. अगर threshold build नहीं होता है, market will definitely take a rejection and सबको लॉन्ग की तरफ बिठा के ट्रैप करके फिर से यहाँ पे S2B1 सेटअप के साथ मार्केट नीचे आते हुए दिखेगी. हमेशा याद रखना है इस चीज को. राइट? एट द करंट स्टेट ऑफ एक्शन में भी अगर मैं आपको प्लान ऑफ कंडक्ट दिखाऊं ना, हर एक प्लान ऑफ एक्शन के साथ मार्केट ने मूवमेंट उसी सेटअप के साथ बनाया है. सेटअप 1, सेटअप 2, राइट? लाइव ट्रेड 28 मार्च का इसी पॉइंट ऑफ एक्शन. हर एक पॉइंट ऑफ कंडक्ट के साथ यही मूवमेंट आपको दिखने को मिलेगा. राइट? बट नीचे से ऊपर के लिए त्रिशूल अभी तक क्रिएट होते हुए नहीं दिखी है. सो एक ही चीज आपको फॉलो करना है एट द करेंट स्टेट. वो क्या है? क्या मार्केट नीचे से ऊपर जाने के लिए एक प्लान ऑफ एक्शन कंडक्ट करेगा या नहीं? 1, 2, 3. अगर ये सेटअप बिल्ड होते हुए दिखती है तब जाके रिवर्सल में बैठो. तब तक के लिए नो रिवर्सल्स टू बी लुक्ड. एंड ये रिवर्सल मैथमेटिकल नंबर्स के पास ही मिलेगा, बीच में नहीं. ओके? सो फॉलो दिस रूल, बी इन द डायरेक्शंस ऑफ द मैप. ओके? जैसे ही हमारा 1 hour ऑफ appreciation allocation हुआ है, what are the next steps that I'll be looking at the current state? The next steps that I'll be looking at the current state is 15 minutes जहाँ पे हमारा execution होती है. Right? So in this 15 minutes, what are the major things that I'll be looking? Definitely कल का दिन market POI range, परसों का दिन market POI range में था यहाँ पे, right? POI range होने के बाद आज का दिन, sorry, यहाँ पे POI range में था. आज का दिन में मेजरली मेरे को सर्कुलेटिंग सप्लाईज चाहिए. सर्कुलेटिंग सप्लाई कहाँ कहाँ पे है एट द करेंट प्लान ऑफ एक्शन? प्लान ऑफ एक्शन नंबर 1. हर एक सर्कुलेटिंग एक्शन प्लान कहाँ पे है? सर्कुलेटिंग प्लान ऑफ एक्शंस. सर्कुलेटिंग एक्शंस has been created at point of action number 1, point of action number 2, point of action number 3. लो जनाब, we have the biggest circulating supply at the current state. राइट? मतलब जिसी भी टाइम ये पकड़ेगा डायरेक्शनल मूवमेंट, राइट? सो इट विल इजीली गिव अनदर 5000 पॉइंट्स. राइट? जो हमारा शॉर्ट का ट्रेड जो चल रहा है ना, विच इज करेंटली विद 6000 पॉइंट्स, सेम सिनेरियो you will see over here again post the liquidity hunt. राइट? जैसे ही ये रिटेलर्स का एसएल लिक्विडिटी हंट होती है, जो कि हर एक सिस्टमैटिक प्लान वे में बैठे हैं रिटेलर्स पोजीशन के साथ, ये प्लान ऑफ एक्शन जैसे ही हंट होता है, एक रिवर्सल दिखने को मिलेगा हमें यहाँ. राइट? सो क्यों वो रिवर्सल हमें दिखने को मिलेगी? क्योंकि इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में मेजर अलोकेशंस बिल्ड आउट पे होती है. मेजर अलोकेशंस बिल्ड आउट पे होती है मतलब लिक्विडिटी हंट करेगा जितने भी लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं, राइट? पूरा प्लान ऑफ एक्शन के साथ जो पैरेलल चैनल है, इधर अलोकेशन दिखाएगा. पोस्ट अलोकेशन हर एक लोगों को यहाँ पे शॉर्ट में बिठाएगा. जैसे ही शॉर्ट में सब लोगों को बिठाएगा, मार्केट क्या करेगी? मार्केट इस पॉइंट ऑफ एक्शन में आके जो हमें एक्सटर्नल लिक्विडिटी चाहिए, वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी यहाँ पे लेके कंटिन्यूटी में दिखने को मिलेगी मार्केट, उससे पहले नहीं. ओके?
So this will be the plan of action of the BTC, what we'll be looking in coming 2 to 3 days, right? I am not even worried if the market will go under the consideration for 2 to 3 days of POI zone. अगर POI zone में भी जाता है that's totally fine. 1500 पॉइंट ही हमें चाहिए रोज का, वो दे देगा मार्केट, right? Please follow the simple step rule. Be in the directions of the market, not against to it, right? Same allocation 15 मिनट में भी सप्लाई एंड डिमांड का करके देखे तो what do we notice? हर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में हमारे पास पीओआईज है, राइट? इंड्यूसमेंट का एवरीथिंग इज अ पार्टनर्ड ओवर हियर, राइट? पार्टनर 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 पार्टनर, राइट? क्या हुआ यहाँ पे? इंटरेस्ट वन, पार्टनर टू, पार्टनर थ्री, पार्टनर फोर, पार्टनर फाइव. What did market tend to do? Retrace, break, continue, right? Partner one, partner two, partner three, partner four, partner five, partner six, break, rejection, continue, राइट? ये जो छोटा छोटा मूवमेंट्स दिख रहा है ना आपको, ये छोटा छोटा मूवमेंट्स इज ऑफ 900,000 पॉइंट्स वाला मूवमेंट्स है, राइट? इस कंसिडरेशन में व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स, राइट? यहाँ पे रिटेलर्स ऐसे ट्रेड कर रहे होंगे ना हर एक कैंडल के बाद, क्यों दिखाता हूँ, आई विल कम टू दैट पॉइंट एज वेल, राइट? ईच एंड एवरी प्रिसिशंस में उनको दिख रहा है कि मेरे को यहाँ पे 100 पॉइंट चाहिए. अगर मैं ड्रॉ करते चलूं, दिस इज माई सपोर्ट, this is my resistance, this is my support, this is my resistance, this is my support, this is my resistance, right? Every precisefulness has a movement, right? ये क्यों बता रहा हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि अगर आप 5 मिनट में आओगे यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर, राइट? हर एक कैंडल, हर एक प्रिसीजंस, राइट? यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ किए लॉन्ग के लिए बेटा एसएल हंट, राइट? जैसे ही ये रिट्रेसमेंट के साथ नीचे आते हुए देखिए यहाँ पे बेटे फिर से एसएल हंट, राइट? देन इस कैंडल के बाद 1 2 कंटिन्यूटी, यहाँ पे एसएल हंट, राइट? इन द प्रिसिशंस ऑफ ईच एंड एवरी मूवमेंट व्हाट इज मार्केट ट्राइंग टू इंडिकेट द रिटेलर्स, यहाँ पे हर एक लोगों को यहाँ पे बिठा रहा है. क्यों बिठा रहा है? बिकॉज इन द प्रिसिशंस ऑफ द मूवमेंट मार्केट हमेशा डायरेक्टली पैसा नहीं देता, राइट? क्या किया? फिर से यहाँ पे बिठाया इमीडिएटली, राइट? ऑन द ब्रेक जितने भी लोग लॉन्ग किए, क्या किया मार्केट यहाँ पे? फिर से ट्रैप, चलो कंटिन्यू, गया ऊपर, फिर से ऐड ऑन हुए, जैसे ही नीचे आया ब्रेक. अभी क्या करेगा? जितने भी लोग यहाँ पे बैठ रहे उनको बिठाएगा, एक रिट्रेसमेंट आएगी, उस रिट्रेसमेंट के साथ S2B1 सेटअप क्रिएट होते हुए नीचे आएगा 15 मिनट. ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इन ए वेरी पर्टिकुलर मैनर. 5 मिनट और 1 मिनट में क्रिप्टो ट्रेड करो ही मत, ना गोल्ड करो ना इंडियन सेशंस करो. Follow the rules, be in the directions of the market. You guys will understand it in 15 minutes, right? In 15 minutes it's very clear that market is going to come down, right? So always remember one thing, follow the rule, be in the directions of the math, not against the math. Mathematical precisions work so accurately in the markets. Following a simple supply and demand, you guys will tend to have a really good movement plan of actions. Okay? So guys, any doubts in BTC? Good evening, Imran. But before the trend reversal, there is a circulating supply in 1 hour from 11th March to 25th March. 1 hour, 11th March to 25th March. वो लेगा यार. Don't worry.
11th March to 25th March. यहाँ पे कहाँ पे है सर्कुलेटिंग सप्लाई? दिस मूवमेंट इज नॉट, नीलेश, अगर ये मूवमेंट आप सर्कुलेटिंग सप्लाई में है करके बोल रहे हो, यू आर रॉन्ग। यहाँ पे कहाँ पे है? 1 2 3 4 5 6 7th candle you are getting in the precisions of one retracement point. This is not a circulating supply. Yes, definitely if you're looking in precisions of the entire movement allocation point, this is one of the circulating supply from the 18th March, right, till 21st March, one circulating supply, right? So that wasn't taken, वो आज ले चुका है, right? Second thing, जो हमारा ये सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है यहाँ पे जो बिल्ड आउट पे था पीओआई रेंज के साथ जो लिक्विडिटी हंट हुई थी, that liquidity is grabbed on 20th March, right? So with this precisions, what are the next steps that you will be looking over here? Okay, from 14th March to 19th March, right? The movement was captured on 20th, right? But from the 19th March to the 20th March, movement wasn't captured. Okay, so when the movement wasn't captured, we got a recreation of circulating supply, right? So at this point of action, we got a recreation of circulating supply. With the circulating supply, we had a POI range. With both point of interest, market tend to hunt them out on what day? This point of interest, which is on 25th, right? So definitely this was hunted, this wasn't hunted, this was hunted, right? Post hunting, what are the next thing the market is trying to do at the current stage? Market is point of interest में आके reallocation structure build कर रहा है, कैसे? If you notice, this is a reallocation structure. मतलब एक ही जोन ऑफ एक्शन में मल्टीपल सर्कुलेटिंग्स क्रिएट करना, राइट? जैसे ही मल्टीपल स्ट्रक्चर्स क्रिएट किया था, ये कंटिन्यूटी के साथ जो फ्राइडे के दिन मूवमेंट जनरेट होते हुए दिखी थी ना आपको, ये मूवमेंट आया था ये जो हमारा 19th का सर्कुलेटिंग सप्लाई हंट करने, राइट? सो जो 11 से लेके 18 तक सर्कुलेटिंग सप्लाई था, दैट वाज हंटेड ऑन 20th, राइट? 19th का छोड़ के 20th से लेके जो भी सर्कुलेटिंग सप्लाई क्रिएट हुआ था वो 25th को कंप्लीट हुआ, राइट? एट द करेंट स्टेज आज के दिन 31st को आके 19th का सर्कुलेटिंग सप्लाई कंप्लीट हुआ, राइट? पोस्ट कंप्लीशन ऑफ सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पे रिप्रिसिशन बिल्ड होगा ऑन द हंट। वही तो बोल रहा हूं, अगर इस पॉइंट ऑफ एक्शन पे मैं कहाँ पे बात कर रहा था, ये पॉइंट ऑफ एक्शन पे बात कर रहा था, इस पॉइंट ऑफ एक्शन पे जब मूवमेंट ऑफ एक्शन जनरेट होते हुए दिखती है, राइट? रीअलोकेशन ऑफ प्रिसिशन कितना ज्यादा होगा, आई विल शोकेस यू दैट, राइट? सो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमारा टारगेट है, राइट? लेट्स लुक इनटू द टारगेट प्रिसिशन कहाँ पे है। क्या सर्कुलेटिंग सप्लाई से नीचे है या ऊपर? नीचे है ना? सो डेफिनेटली इट विल कम डाउन टू हंट। Post hunting, the movement will be looked under the circumstances of rebuilding. उससे पहले मत देख रिवर्स, राइट? बट सर्कुलेटिंग सप्लाई अभी सिर्फ लॉन्ग की तरफ बचा है, राइट? बट वो आज या कल में मत देखना, आराम से देख। जब त्रिशूल बिल्ड आउट होता है, त्रिशूल बिल्ड आउट होने के बाद जब प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन जनरेट होते हुए दिखती है, तब जाके नेक्स्ट एग्जीक्यूशन विल बी टेकन अंडर द कंसिडरेशन, नॉट प्रायर टू दैट। फ्राइडे न्यूयॉर्क,
ओके नीलेश, द एंटायर मूवमेंट कैसे, आप कैसे ले लिए एंटायर मूवमेंट? मैं सर्कुलेटिंग सप्लाई कहाँ पे देखने बोल रहा हूँ, आप कहाँ पे देख रहे हो सर्कुलेटिंग सप्लाई नीलेश? 4 आवर्स में? ये न्यूयॉर्क का पे गया? 15 minutes sir, I took sell order looking at the volumes. Sell was my Friday 9:30. Morning, evening, Imran. 9:30, 15 minutes. हाँ, ये तो आपने बताया था ना, लिए हो करके। अभी तक चल रहा है, वेल एंड गुड, बने रहो। Evening, yes, you can still be in the trade. Execution was perfect, right? S2 B1 setup के साथ execution है, really good. Not this one or this one. Evening is 21:30, no? Wait, I was talking about this 9:30. This 9:30, if you have executed, good one. This 9:30. Reason of execution, looking at volume of sell, was my order correct? With what setup did you execute? One, two, three. There is no setup only. No, I am talking about New York morning. Ah, this is in New York morning only. Yeah, that setup is good. This setup is right. That's what I said. 9:30 only, no? Yeah. Perfect. Good entry. You followed S2 B1. Good one. No doubt. Same is this. How many points did you close at? The majority will be taken under the consideration is how many points did you look into the consideration and closed it at? Now it's in running. Good. So your execution is at 85,300. With 85,300, market is running with 82,112. Keep it up, my boy. Keep it up. Good job. Hold it till the time there is no precisions.
ओके, त्रिशूल बनने तक एग्जिट मत करना, ठीक है? भाई गोल्ड में जाने के लिए मेरे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ये और 2 दिन ग्रीन में रहेगी। क्या करे, एग्जिट तो मत करना जो 15% चल रहा है आप लोगों का। I looked for multiple sell candles in the POI range and executed the trade. Lovely. Keep it up, Timra. Keep it up. वरुण, तुम्हारा कितना पॉइंट्स से चल रहा है? ब्यूटीफुल। गोल्ड में एक्सप्लेनेशन चाहिए आप लोगों को? हाँ, नीलेश, होप यू गॉट योर पॉइंट ना। यस सर, गॉट इट। आप लोगों को नोटिफिकेशन आ रहा है जब मैं लाइव आता हूँ? And guys, all the new members, whatever doubts you guys are having in related to the markets, please do ask. पूछिए, राइट? जब पूछोगे, जब डाउट्स क्लियर होगा तभी सीखोगे, वरना नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। ओके, हम यहाँ पे पागलपंती करते रहते हैं कभी कभी। ओ, पागलपंती इतना एक्यूरेट होता है क्या सर? क्या करे?
आज एक दिन वक्त दो मेरे को, राइट? मेरे पास सही सेटअप नहीं है यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए। जहाँ पे बुक लॉन्च हो रहा था ना, उसी बुक लॉन्च का एक रूम से लाइव चल रहा है। बट या, नाइस। नो सर, नोटिफिकेशन का इशू है, एटलीस्ट फ्रॉम माय साइड। अदर्स में कंफर्म इट इफ दे आर फेसिंग द सेम। बेल आइकॉन ऑन है तुम्हारा, नीलेश? I like the stream because content is A plus grade and also not spammed. Don't worry. Thank you so much, Imran. Okay, we'll speak with the team. YouTube वालों के साथ बात करते हैं। मेरा भी ऑन है। आज सुबह कोई नोटिफिकेशन आया नहीं। नहीं नहीं समर्थ, आज सुबह स्ट्रीम था ही नहीं। आई वॉज इन द बुक लॉन्च। Yes, I also didn't get the notifications. Okay, sure. I'll speak with the team. वर्षा, ये स्क्रीनशॉट यूट्यूब वालों को भेज दो। कौन? हाँ, इमरान। इमरान और वरुण को छोड़ के लाइव में और कोई ट्रेड पे है? गोल्ड का ट्रेड में कितने लोग हो? गुड इवनिंग सर, वेयर डू आई गेट योर बुक्स? अमेजोन? अमेजोन में सर? किसी को नहीं जा रहा है क्या? नाइस। थर्ड बुक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, ठीक है? थर्ड बुक इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। दैट विल लॉन्च नेक्स्ट वीक। Currently launched in European countries and Australia. UAE, UK, New York, and India will be launching next week. दूसरा दो बुक जो है वो गूगल पे मिल जाएगा। यू कैन जस्ट पुट माय नेम। गोल्ड ट्रेड मेरा है फ्रॉम मॉर्निंग 30,080। वाह मेरा शेर। 30,080। 30,080। गुड एंट्री।
बट मैंने इमरान और वरुण का नाम हटा के बोलने बोला था। मैं हूँ। आज ईद था, सुबह ईद स्टार्ट विद गोल्ड ऑर्डर। लवली। What's the name of the latest book, sir? And what is the subject? Subject is very unique. It's Blueprint to Wealth. How a person can start from zero and can make million. Each and every strategies is there in that book. Starting from trading, real estate, right? Freelancing, investments, in investments, seven categories, right? Associating to the startups, venture lights, craplemons, re-elevations, recatalysts, everything is covered. जो बुक में क्या क्या चाहिए ना, एक करोड़पति बनने के लिए सब चीज है उस बुक। यस, डेफिनेटली इन हिडन वर्ड्स है, राइट? अगर आप लोग बुक क्रैक करते हो तो इट्स वेरी इजी फॉर यू गाइस, and that by following it you will need max to max 3 years, right, in a different ways to earn $1 million from zero. Only 3 years with proper hard work. I'm not talking about this trading stuff, okay? Without trading also you guys can do it in 3 years, and that book is filled with secrets. भाई जब लॉन्च होगा तब देखो ना, अभी क्यों दिखाऊं मैं? ना ना ना। एंड कीप इट अप इमरान। रमजान के दिन आप गोल्ड से शुरू किए हो, ग्रेट। एंड छोटे मोटे नंबर से नहीं, 400 पिप्स के साथ प्रॉफिट में हो, ब्यूटीफुल, कीप इट अप। एंड ईच एंड एवरी पीपल, ईद मुबारक, राइट?
एंड सैफ, आपको जो बुक के बारे में चाहिए था ना, दिखाई देता, रुको, वेट। राइट, दिस आर द टू बुक्स दैट विच इज लॉन्च्ड वर्ल्ड वाइड। जो नया बुक है दैट इज लॉन्च्ड एट ओनली फ्यू पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट्स, राइट। इंडिया में नेक्स्ट वीक लॉन्च हो रहा है, बट धूमधाम से होगा। ओके सैफ, दिस आर द टू बुक्स। Nice, you have covered a lot of content there. Yes. What happened to the trading book that you said you will launch it for us? भाई इंसान है, मेरे पास दो ही हाथ है, राइट? उसके साथ लाइव स्ट्रीमिंग, राइट, एलटीडीज, बहुत कुछ है यार। इट्स जस्ट नॉट, आई एम जस्ट नॉट राइटिंग द बुक्स, आई एम डूइंग मल्टीपल थिंग्स विद इट। सो यस, इट विल टेक सम टाइम। अरे चुप रहे। एंड हैप्पी फॉर एवरीवन, जो भी डाउट है पूछो, राइट। गोल्ड करने का मन ही नहीं है। अगर मैं गोल्ड करूंगा, कुछ और ही एनालिसिस निकल के आएगी अभी मेरे पास। तो चुपचाप मैं एक नंबर डाल के बैठा हूँ, 3144, दैट विल बी माई एग्जिटिंग पॉइंट। क्योंकि करंट स्टेट में मेरा माइंड 5 जगह चल रहा है, ठीक है। जो बुक लॉन्च हुआ है ना, वो पूरा सोल्ड आउट है। तो पब्लिकेशंस ने हाथ उठा लिया है कि इतना सादा बुक्स हम पब्लिश नहीं कर पाएंगे एक दिन में, राइट, बिकॉज दिस टाइम वी सेलेक्टेड ए न्यू पब्लिकेशंस। सेकेंड चीज, राइट, बीटीसी में जो एनालिसिस दिया हो ना, वो एनालिसिस विदाउट चेकिंग एनीथिंग आई हैव गिवन इट टू यू, राइट। जो रोज एनालिसिस आप लोगों को शेयर होता है, वो एनालिसिस विद ए प्रॉपर बैक डेटा होता है, राइट। आज का जो एनालिसिस में शेयर किया हो आप लोगों को, देर इज नो बैक डेटा इन इट। ओके, व्हाट इज अ बैक डेटा? बैक डेटा इज ए परफॉर्मेंस क्रिएटर। मतलब हर एक पॉइंट ऑफ एक्शन में देर इज ए मल्टीपल व्यूअर्स which is being looked under the circumstances, right? The circumstances is not just looked by trading view charts, it's looked under the fundamentals, right? Fundamentals of the current coin, right? What is the circulations in the market of today's date? ना मैं फंडामेंटल चेक किया, ना मैं सर्कुलेशंस चेक किया। उसके साथ वेयर इज द रियल एक्शन प्लान इंक्लूडेड ऑफ द मल्टीपल वेंचर्स, वो चेक नहीं किया है, राइट। उसके साथ वेयर एग्जैक्टली द प्रिसिशंस ऑफ लिक्विडिटी इज केप्ट, वो बैक डेट नहीं हुआ है, राइट। सो मेजर 1 2 3 4
The four analysis I haven't done in BTC. These are the major things what we need. Always remember when we trade in BTC. आज ये सीक्रेट रिवील करना पड़ा मेरे को क्योंकि मेरे पास वो जो सीक्रेट्स देखना है वो कहीं और है जहाँ पे मैं हूँ वो सब नहीं है, राइट? सो दिस आर द प्रिसीजंस व्हिच यू नीड. ओके, सेकंड थिंग वो है. थर्ड थिंग जो आप लोगों के लिए लॉन्च ऑफ एग्जीक्यूशन देखा था ना, वो लॉन्च ऑफ एग्जीक्यूशन अभी तक बिल्ड नहीं हुई है, राइट? आई विल शोकेस यू वन थिंग. यहाँ पे जो है ना, ब्रेकर पॉइंट करके, द एक्यूरेसी हैज रीच्ड 93.4. 1% चाहिए, राइट? वो 1% के लिए पीपल आर वर्किंग डे एंड नाइट. अगर ये 94.4 होता है देन ओनली आई कैन पब्लिश इट फॉर पब्लिक, नॉट प्रायर टू दैट. थर्ड. फोर्थ, यस, 100 के 4 दिन हो गए. So because of that, we haven't got into the structured analysis of gold. क्योंकि without data, I don't want to give you fake analysis and say कि like या यही है. सप्लाई एंड डिमांड तो आप लोग भी ड्रॉ कर सकते हो. कोई भी डाउट से डेफिनेटली पूछो, उसका आंसर्स देता रहूंगा, मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं. यस, गलत एनालिसिस नहीं देना था. सो गोल्ड उसके लिए छुआ नहीं हूं अभी तक मैं. क्योंकि मेरे को पता है सब लोग गोल्ड में हाथ बर्न करके बैठे हो. एंड आई डोंट वांट टू बी दैट पर्सन कि लाइक ओके ले लो बोलने के लिए. Will you ever teach us other analysis or it will remain secret forever? क्या सीखना क्या है आपको, बताओ तो सही इमरान जी. फ्रॉम 100 पॉइंट्स टू 3500 पॉइंट्स होल्ड करने की कैपेसिटी में आ गए हो. What else you need, you let me know, I'll definitely provide you that. In precisions पूछना, definitely I'll help you out. हर एक चीज में 100% की जरूरत होती है, राइट? आई एम नॉट आस्किंग यू गाइस टू बी परफेक्ट, right? Want I just want you guys to be at least 90% good at mathematical precisions 2.0, right? And supply and demand precisions 1, right? With that, identifying the right buying and selling pressures, right? अगर वो pressures को identify करके mathematical concepts के साथ supply and demand 1.0 allocation आ गया, then definitely I will only come to the next point, right? Because still people are in back testing, people are in forward testing, right? So what could be the main reason at the current stage that I am not moving,
right? Just don't want to push it harder. You're getting my point, Imran? Why I'm not trying to push harder is because of the only one reason. People are in a step process complete होने दो, उसके बाद जाएंगे next step. Okay, I never said you guys know. Excited about the future stuffs. भाई वहां पे आप लोगों को बहुत खर्चा करना पड़ेगा. So whatever you guys are making in profits, right? So protect that profits at least 10% on a regular basis. आगे जाके वो सॉफ्टवेयर्स खरीदने में आप लोगों को बहुत मदद होगी. हाँ, and yes, if your target is somewhere around 10 million, 20 million, you don't need a software. If your target is above 30 million, yes, definitely you will need that software. Am I clear? One more thing, guys. Very important thing. Learn to compound the money. Definitely, I will create a video and upload it. But compounding is very much important in the world of trading. Without compounding, you won't be able to suffice in the market. I'm saying you clearly right now. It plays a very big role, and that big role is not just a role that will change your life. Please understand. If you guys are happy with $1,000, $2,000, in the speed the inflation is going, in next 2 3 years, you guys won't be able to suffice in this $1,000 $2,000 also. Okay, so please be very careful and start working on compounding, because that is the only thing which will help you guys grow. Okay, ये जो आप लोग अभी कर रहे हो ना, मेरे को उससे कुछ मतलब ही नहीं है. The major thing why I have started this is only for one reason: to make everyone rich. That richness will not come from this, what we are currently doing. That will come from building the wealth, which we haven't started yet. Right? Yes, definitely. For that, this is the stepping stone. Hence, we have started with this. This will work as the stepping stone only.
right? After a certain period of time, you won't be able to suffice in the markets. Believe me, this is the truth. So now what is the point of action in BTC? There is no action point at the current state. Indication, execution, that are the only steps what will be taken under the consideration. Why? Because the circulating supply is under the pressure which is getting acted, right? But at a very wrong pace. Why it is at a very wrong pace? It will regenerate the allocations. रैप मूवमेंट allocation समझ में आता है ना? वो है at the current state. A change of build या action कब होगा? जब reallocation of the movement generate होते हुए दिखेगी. Reallocation of the movement generate कब होता है? जब एक proper price action build होती है. Definitely अगर आप setup follow करके चल रहे हो, setup follow करके चलने में आपको दो execution दिखी है, right? At the current state of actions, execution 1, at the current action number 2, execution number 3, right? But it's just a circulating supply hunt. So yes, definitely we will wait for a reaction plan. MTS से जब तक hit नहीं होती है, तब तक no reallocations will be taken under the consideration. As simple as that. Okay? So reversal हम तभी देखेंगे जब हमें a plan of action दिखने को मिलेगी. Because we are not a traders who will hold for 2 3 candles. We are a traders where we hold the trades for more than 2 3 4 5 days. So yes, definitely that will be the plan of actions what we'll be following. Without reversals हम लॉन्ग की तरफ बैठेंगे ही नहीं रंजित. ठीक है? Sorry, yes sir. कितना खुशी खुशी यहाँ पे रिटेलर्स बैठे होंगे ना इस कैंडल पे. गैस एक चीज पूछना था, इंडियन सेशन समझ में आया है क्या? पीओआई जोन संडे के वीडियो के साथ या कुछ और चाहिए उसमें? आई एम रंजित सर. ओके रंजित. Indices screening in only 15 minutes.
1 hour and 15 minutes एग्जीक्यूशन आप लोगों को चाहिए तो 10 मिनट में, सॉरी 5 मिनट में कर सकते हो, बट एंटायर व्यू अलोकेशन शुड बी इन 15 मिनट्स। ठीक है। कौन सा सेटअप बिल्ड हो रहा है, अगर कोई बता सकते हो तो? इन दिस करंट सिनेरियो व्हाट इज द सेटअप दैट मार्केट हैज क्रिएटेड? वॉल्यूम चेक कर लेते हैं। ब्यूटीफुल। एनालिसिस ही नहीं किया मैंने। नहीं नहीं। एस टू बी वन, एस टू बी वन, परफेक्ट गाइस। सर आप हो ट्रेड में? नहीं। मेरा सिर्फ स्विंग चल रहा है। आज के दिन में मैं एक भी ट्रेड नहीं लिया हूं। मैं बिना एनालिसिस का ट्रेड नहीं लेता हूँ। सो यस। एंड जो लियो, प्लीज फॉलो द MTSL एंड प्लीज फॉलो द TSLs। मार्केट को मत देना। आज एक दिन के लिए बने रह जाओ। कल से विथ प्रॉपर एनालिसिस विल डू द मार्केट स्ट्रक्चर प्लानिंग एंड बी इन द डायरेक्शंस।
Okay. All the new members, welcome to the stream. Whatever doubts you guys are having, please do ask. कोई भी डाउट है पूछ सकते हो. नीलेश, कौन सा चार्ट को बैक टेस्ट कर रहे हो एट द करेंट स्टेज? समर्थ, which chart are you back testing? Lovely. Place one trade towards short place. क्या कर रहे हो यार? वो भी लाइव पे. Still doing GBP sir. Okay. फोरेक्स से बाहर निकलो जनाब. कितना जल्दी बाहर निकलोगे उतना अच्छा है. हंस क्यों रहा है वरुण? नहीं नहीं, मैं आईजी स्क्रीनिंग के बिना मैं करता ही नहीं हूँ एग्जीक्यूट. 100 पॉइंट की एक ट्रेड लो ना. नहीं, चाहिए ही नहीं है. मेरा स्विंग ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है, वही हैप्पी. मैं बहुत हैप्पी हूँ उससे आज के दिन में. कल से करते हैं ना. आज एक दिन बख्श दो मेरे को. कल से जहाँ पे बोलो वहां पे पंच करूंगा मैं. 100%. यस. किसी को भी विंग अलोकेशन करना है कर सकते हो इस जोन पे. आफ्टर क्लोजिंग ऑफ दिस कैंडल
विंग अलोकेशन करना है तो यहाँ पे कर लेना, ठीक है। All the new members, whatever doubts you guys are having, please do ask. Imran, Friday morning, okay, Friday morning session में नहीं थे ना? I will explain it to you tomorrow again, okay? With a proper analysis. Ranjit, give yourself 22 days. Chart understanding problem clear हो जाएगा. Right? For that, you have to do the back testing. Right? With the back testing, real allocations in the market works in a better way. So you have to understand how does the movement works. For that, you have to do 2 years of back testing, 1.5 years of forward testing, and 1 month of live testing to understand it better. एंड जिनको भी विंग अलोकेशन आता है, विंग अलोकेट करके बताओ कौन सा डायरेक्शंस में मार्केट मूव होगा.
In Indian markets on a monthly expiry, there is usually a volume breakout as they may be positions closure or rollovers. So, do we consider that volume for deciding the pressures, or how do we look at that? There'll be no lookout for a precisions into the big pressure creations onto the monthly expiries. If there is a rollover or there is a volume breakout, that is just an indication of a repressuring allocations which will be taken under the consideration for carry forwards. Okay, Nilesh. For that, you need to have the data, Nilesh, which Indian markets never provide you that. For retailers, I'm talking. No worries, Nilesh. We are working on something that you guys can get the data as soon as possible, right? But only one thing, we need the approval from certain authorities, right? If we get the approval, definitely TTS will have all the data that you guys needed. Okay? Give us some time. We are working on that. Will that be of free of cost? आप लोगों को पूछ रहे हो क्या? हाँ, ले लो यार. उसमें सब क्या है? जितना मेरा एक ट्रेड में बनता है उनका मंथली फीस है वो. तो ले दे सकता हूँ फ्री में. डोंट वरी, आई विल गिव इट फॉर फ्री. एनीथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ ट्रेडिंग जर्नी ऑफ यू गाइस. क्या बात कर रहे हो सच में? ले लो स्मिता मैम, आपको कुछ भी ले लो. यूट्यूब में आधा स्क्रीनिंग वही प्रेजेंट कर दूंगा. काफी है. People will be mad. What is happening in the stream?
सर शॉर्टकट ट्रेड होल्ड करो ना, एमटीएसएल फॉलो करो, मैथमेटिकल नंबर्स अलोकेट करो, आपको पता चलेगा कहाँ तक आएगा कहाँ तक नहीं। ओके। Thank you, sir. At least that way we could come to know what different info does pro player get compared to retailers. I have heard that the data cost is beyond the retailer's reach. Thank you, sir. Thank you, sir. At least that way we could come to know what different info does pro player get compared to retailers. I have heard that the data cost is beyond the retailer's reach, but don't know exactly what data that they provide for such money. डेफिनेटली उतना पैसा जब दे रहे हो ना, हर एक सेकंड का काउंट आपको दिखने को मिलेगा, कौन सा सेकंड में कौन कहाँ पे ट्रेड प्लेस किया है, कितने का किया है। वो तो हमारे पास ऑलरेडी बीटीसी एंड गोल्ड का है। इंडियन मार्केट्स थोड़ा ये है। वेंकट, बैक टेस्टिंग कैसे चल रहा है? हाउ इज योर बैक टेस्टिंग, फॉरवर्ड टेस्टिंग गोइंग ऑन? In this scenario, what you will be doing? There is a buying pressure, but immediately on the next candle, you are seeing a selling pressure. What will be the allocation that you will be working at the current state? Batao.
वो क्या बताना, वो मूवमेंट शुरू ही कर दिया उधर। You're not getting any doubts, Venkat? Whichever the side the setup is created, in this scenario, S2B1 was created towards the bearish scenario, correct? So market will not capture the buying pressure. This will be a trap. Why? Why it will be a trap? Because this is a support range for all the retailers, right? So always the selling pressure will work over here, not the buying pressure. Okay. बैक टेस्ट करके देख लो, पता चल जाएगा। जहां जहां पे सेटअप क्रिएट होता है हमारा, वहां वहां पे उस सेटअप में अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में विक क्रिएट हुआ है, हमेशा फेल होगा। हमेशा। 99.9%। एंड ये मूवमेंट कहाँ तक आएगा एट द करंट स्टेट? ये मूवमेंट कहाँ तक आएगा करंट स्टेट? सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ तक आएगी। ओके। व्हाट एनालिसिस इन बीटीसी? अगर रंजित है तो होप ही इज देयर इन द स्ट्रीम। रंजित, समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे?
I don't see Anupam nowadays. He was in the holidays. He came back on Friday. फ्राइडे के मॉर्निंग के स्ट्रीम में थे, राइट? आज का स्ट्रीम हमने एक बार रिफ्रेश कर लो सभी लोग। भाई साहब, कम ऑन, रिवर्सल कभी भी आ सकती है 18 मिनट के बाद। हर एक लोग, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं ना रनिंग में, तो यहाँ पे इस ब्रेक पे सबको बाहर करेगा अभी। वॉल्यूम देख लेना 1 घंटे में एक बार सभी लोग, समझ में आ जाएगा क्यों बोल रहे हो। ठीक है। कुछ भी मत बोल वरुण।
सर आज का दिन का देखो ना समर्थ। सर व्हाट इज द इंडिकेटर फॉर वॉल्यूम इन ट्रेडिंग वेव? वॉल्यूम। वॉल्यूम का इंडिकेटर वॉल्यूम ही है। इमरान शॉर्ट में हो? अगर हो तो वेल एंड गुड। Is it taking circulating supply of today in gold? Yes. Volumes is always compared into the day to day voice. एक घंटे का वॉल्यूम आप कंपेयर कर रहे हो 48 आवर्स से ज्यादा पीछे की डेट के हिसाब से। हाउ विल दैट वर्क? इट वोंट वर्क। Same day, 1 hour volumes are considered and looked in perspective of today only. Is thoda late 3118? 3118 इस कैंडल में नहीं है। कोई बात नहीं, उधर से भी 200 पिप्स चल रही है। वेल एंड गुड। When did you take the last hit, Imran? MTSL फॉलो करो। जितने भी लोग शॉर्ट में हैं MTSL फॉलो करो। Tomorrow. All the analysis tomorrow. Yeah. When did you take your last SL is what I am asking. Last 2 weeks, no SL. Sir, why BTC and gold in same direction? क्यों अलग अलग होना चाहिए क्या? Excel theory 1:10 risk to reward.
right? Each and every positions holded from this point till this point has 1:10 risk to reward ratio, right? मतलब यहाँ पे जितने भी लोग होल्ड कर रहे हैं उनका एसएल रेंज ही 10 पॉइंट के ऊपर का है, right? So that theory works in Excel, so that is called as circulating supply. Yesterday different. So you go with, don't go what you're seeing, trade what you see. Okay, beautiful. I gave you explanation 30 minutes back, no, for BTC. क्या बोला था रंजन? What did I say? रिवाइंड करके एक बार देखो क्या बोला था करके. When the market was here, I said something to you. इतना आसान तरीके से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा. रिवर्सल में देखना है तो ये सेटअप हमें चाहिए. बिना ये सेटअप बने मार्केट ऊपर कभी भी मूव नहीं करेगी, ये समझो. एंड ये सेटअप हमें 1 घंटे में चाहिए. Nilesh, hope you understood why did the market come up. This was exactly the perpendicular movement. हॉन्ट, हंट, जो भी बोलना है कहो. सर्कुलेटिंग सप्लाई बिल्ट हुई, कंप्लीशन, कंटिन्यूटी. एंड मेजर रिवर्सल हमें देखना है तो इस पॉइंट ऑफ एक्शन से ही मिलेगा, उससे पहले नहीं. तो इमरान आपका MTSL 84,600 पे लाके रख लेना. ओके. वेलकम बैक. अगर एक क्लोजर यहाँ पे हुआ ना, फिर से रिजेक्शन लेके कंटिन्यूटी में ऊपर जाए. In Trishul, the middle candle should be majorly covered with the wick only. Sir, once GU analysis. Good evening, Karthik. Karthik, I'm not having a right tool to give you the right analysis at the current space. Agar if you're okay with 80% accurate analysis, then I can provide you. Not 94, 95, 96. The market is bullish till 94,000, no? Sorry, sorry. That is Japanese yen. 1 hour. Okay, this is only 80% accurate analysis. Don't take beyond that. अगर पूरा कॉन्फिडेंस मेरे पे रख के ट्रेड ले रहे हो इस चीज पे, लो ही मत. सिर्फ आज के दिन में.
मैथमेटिकल नंबर्स आप लोग कर लेना, मेरे पास सिस्टम नहीं है एट करंट स्टेट। ठीक है। दिस इज द टारगेट्स TP1 का। सर आप आग बंद करके ड्रॉ कर रहे हो क्या? क्यों? ऐसा सवाल क्यों आया आपको? नहीं, जहाँ से चाहिए वहां से ले रहे हो। अंबिका चुप रह जा थोड़ी देर। उसके लिए पहले ही बोल दिया ना मैं। ओनली 80% एक्यूरेसी। नॉट मोर देन दैट। दिस इज द करंट प्लान ऑफ एक्शन फॉर GBP। ओके कार्तिक। दैट इज 80%, इज इट? नहीं नहीं। 50%। आई कुड से दैट इज 95। लवली। अच्छा हुआ मजाक को भी मजाक से हट के लिया तूने। थैंक यू फॉर दैट। व्हाट इज द नेक्स्ट टारगेट फॉर गोल्ड? सर वो क्लियर कट यहाँ पे है सर। 3144। 1 आवर में हमें इंडिकेशन भी दे दिया मार्केट ने। सर्कुलेटिंग सप्लाई लेने आया था। रिवाइंड करके देख लो सभी लोग। जितने भी लोग यहाँ पे रनिंग में बैठे हैं ना, सबका अकाउंट ब्लो। सबका नहीं तो भी 98% लोगों का तो ब्लो। उतना गारंटी तो है। जब एक कैंडल बन रहा था तब भी पता चल गया था आज आधा का आधा अकाउंट खाली होने वाला है। वेट। सेम सिनेरियो। आराम से। माइंड को शांत रखना है। सेटअप जब बनता है तब एग्जीक्यूट करना है।
गॉट द पॉइंट? यहाँ पे जितने भी लोग एग्जीक्यूट किए, वेल एंड गुड. इमरान, कीप अप द गुड जॉब. वरुण, कीप अप द गुड जॉब. एंड ऑल द एलटीडी members, keep up the good job. And you, wonderful trade. Smita ma'am, beautiful. अभी नेक्स्ट सेटअप जब तक नहीं बनेगा, नो एड ऑन क्वांटिटी टुवर्ड्स द लॉन्ग. क्लियरली सुन लेना सब लोग. ओके. For my short order, I closed it at my MC 2.0 15-minute target 3101 and placed one long there. Now running with 120. But one thing, Imran, one precise full understanding you need to have. Definitely with the volume, with the mathematical number you have executed the trade, I loved it, right? But whenever you're taking a direct candle entry, what is the one major thing that you have to keep in mind? Direct execution में मत जाओ. Okay, please always remember, don't go to the direct execution. If you're looking for a direct execution, let all the circumstances be with you. Okay. So next setup in 1 hour or 15 minutes. Setups are always in 15 minutes. Okay. And everyone keep up the good job, guys. वो $120 बोल रहा है क्या? वो 120 पिप्स बोल रहा है मैम. Oh, that's what I thinking. It was rush entry. It was not rush entry. It was overconfidence, but overconfidence इस समय पे सही जगह पे था, गलत जगह पे नहीं. So yes, exception is taken under the consideration. Going forward, don't repeat it. Okay. Yes, definitely you can look for an entry where there is a precision of all the indications given to you. Right? Circulating supply complete हुआ, mathematical number का edge है, उसके साथ volume spike in 1 hour, candle closure. Yes, when you get all the executions, definitely, no doubt. But when you're not having all the confirmations, no hurry. Wait. Sir, now if the current candle closes above the previous green candle, open, will it considered third three candle setup? No. Gold में three candle setup कहाँ पे देख रहे हो? Rishul is only known in BTC and cryptos.
not in any other markets. Please understand that, guys. एंड अगर यहाँ पे आप एग्जीक्यूशन देख रहे हो विथ S2B1, देखो ये मत, 150 पिप्स का SL है आपका यहाँ पे। थर्ड कैंडल क्लोजर के साथ तो 200 पिप्स हो जाएगा। Sir, on 28th March 6, 7, 8 a.m. candles formed Trishul in 1 hour, but there is a selling pressure. So the market moved down even after forming Trishul. 28th March in किसमें? Which one? BTC. 5:30. सच में 20th March कहाँ पे है जनाब त्रिशूल? 28th March. Where do we have Trishul at 6, 7, 8 a.m.? 28th March, 6 o'clock. Where do we have a Trishul, sir? There is no Trishul. 28th March, there is no Trishul in BTC. Okay. This is 28th March, right? So 1 hour, 6 o'clock candle is this. There is no Trishul. 7 o'clock candle is this, no Trishul. 8 o'clock candle is this, no Trishul. Okay, sir, my bad. No, in learning stage, that's totally fine, Karthik. Only one important thing that you have to keep in mind is you're in a learning stage. So, galtiyan maaf hai. As the supply is completed, there are three S2B1 formations at Indian time: 13:30, 16:15, and 18:15. So, how the last one where the short trade was executed different from the previous formation? मतलब समझा नहीं.
As the supply is completed, there are three S2B1 formations at Indian time: 13:30, 16:15, 18:15. किस में बात कर रहे हो? गोल्ड में? 13:30. Okay. 13:31, 6:15, 13:32. Okay. 18:16. Yes. क्या हुआ यहाँ पे? What are the problem? आप यहाँ पे एग्जीक्यूट किए, टेकन, राइट? यहाँ पे एग्जीक्यूट किए, टेकन, रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो हुआ, यस, राइट? बट the setup, what if you are looking at this current stage, right? Only one thing I could say: was it in your risk to reward? No. How will you execute the trade here? Okay, let's talk about your confirmations, right? So what is the SL range over here? The SL range is 4.8. Great. What is the range over here that you are having? 3.9. Great, right? But at this scenario, your first range of SL is only of 5 points. How will you execute the trade? The entire allocation is of 100 pips now. How will you take under the consideration? With that perspectives, let's look into the different plan of actions, right? At this plan of action, you know, okay, the point of action 1 is taken under the consideration and covered up at this point of range, right? With this point of range, you executed the trade over here. Well and good, right? Because there is no break, continuity, wonderful. With that perspective, what is the next scenario that you will be looking over here? You will wait for an allocation, right? Definitely, we had an allocation point over here. With this allocation, you will look for the next, right? With this plan of action, there was a continuity. First plan will be of 200%, right? So you know that the market is tend to cover up this range, right? So you will look for a previous rejection perspective to the current. With the current perspective, what will act as the reversal point? The same point of action will act over here, right? Once the confirmation of this gets into the play, what will be the major role of action that you will be getting at this current stage? The entire first demand line will act as your current range, right? In this scenario, definitely you will look for a short, right? If I map from this point of action to this, what do you see? The market came down, right? Because we had an internal swing. What is the internal swing? Demand got converted into the supply. When there is a demand got converted into the supply, you got a confirmation of a movement, right? With this movement plan of action, London session का trade allocation था 4 points का SLB रखते हो. What is the reward you have got? 110 pips. Is it a good one? Yes, beautiful, right? Definitely we got a buying pressure over here. You could have looked into a circumstances of a retracement point. What is the first retracement point that I will be looking over here? The previous. If I take the previous movement and allocate it at the current state of actions, okay, you will be knowing the precisions is of the movement towards the buy, right? With this point of action, what will be your first SL act? The same precisions what you have taken over here, right? Say me one thing, when you have a double confirmation of a closure in 200%, why will you look for a short at first place? Right? Definitely, market went up again, following the same parameters as per the previous. Did it work?
beautifully, right? Do we have a setup? Beautiful, right? जितने भी लोग एग्जीक्यूट भी नहीं किए थे, स्ट्रीम पे आने के बाद बोलने के बाद यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लिए, right? What is the movement they have? Simple. First, always remember whether there is a risk to reward. Second, remember whether the supply is completing or the reversal of supply to demand is being generated or the demand to supply is generated. With the precisions, why will you execute a trade at this point, Nilesh? Now you got my point why I'm talking about the precisions of the risk to reward is always calculated in the directions. Hmm? Right, I missed the 200% completion and the SL range. Yes, going forward, अगर 200% SL range miss भी हो रहा है ना, that's totally fine. Risk to reward is always calculated. इस scenario में your first protections will always be considered in the moment of the SL range. Right? अगर SL range ही सही नहीं है, how will you look for an execution? But yes, good question, good understanding. Don't repeat the mistakes. 150 pips running long, reason of execution, SC hand. 140 pips running long. Beautiful, guys. Right? Whatever doubts you guys are having, please do ask. Stream will be there for next 10 minutes. Sorry, 5 minutes. Imran, MTSL follow करो. Take home 100 pips. ठीक है? All the new members, welcome to the stream. Whatever doubts you guys are having, please do ask. The stream will be there for next 5 minutes. The remaining, whatever doubts you will be having, you can ask in the morning or tomorrow evening sessions. Yes, I didn't close the morning long order. Perfect. Now move the MTSL of morning long order and as well as the sell order. Both the MTSLs should be intact. Where will you place the MTSL at the current state, Imran? Sir, which book are you reading at the current state? The Diary of a CEO by Stephen Blattlet.
Beautiful book, huh? How many books do you carry when you travel? 7 books. 3096. 3099. For the long from 3080. Yes. This add-on quantity will be in precisions of only two allocations perspective. There shouldn't be a continuity of S2B1 setup over here. Okay? If there is no S2B1 setup created over here for a short, you can look for another add-on over here with the same setup you will be getting. Right? That will be the allocation towards the continuity. If this setup gets prevented, the market will tend to come down and take the people whoever has sit in the running over here. Right? सबको उड़ाएगा फिर से. Believe me. प्लीज कमेंट मत करना. तू देख के कमेंट करने से पहले ही मैं तेरे को बता दे रहा हूँ कमेंट मत करना. No, no, I'm not talking about you. Right? You have taken exactly from the bottom. There are people who have sat from 3106, 7, 8, 9, 10. I'm talking about them. Karthik, if you're there in the stream, this is for you, man. और ये आपका 80% एक्यूरेसी है. बिना कुछ देखे इतना करंट ड्रॉ करते हो. भाई चुप रह जा तू थोड़ा देर. So,
किसको प्रूव कर रहे हो? मैं किसी को प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है अंजलि. This is without the data, okay? एंड पूरा स्क्रीनिंग भी नहीं हुआ है. So everyone remember one thing: fearless trading with proper risk management, emotionless trading. जीतने से खुशी मनाना, हारने से दुखी हो जाना is not the quality of the traders. Be in the directions of the math. Don't trade impatiently, trade patiently. Don't take running candle executions. Don't take the executions in FOMO. Wait for the point of interest to develop with the setup of S2, S1s. Execute the trades and sit patiently till the targets. कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना. मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, ईद मुबारक, हैप्पी युगादी, हैप्पी न्यू ईयर, गुड़ी पाड़वा, हैप्पी पोंगल एवरीवन. Take care. Bye bye. Nitesh signing off.